Assalamu alaikum everyone. Today we're going to start sequence and series. From an NET perspective, this chapter is honestly very important. इस चैप्टर का फ़ायदा अब हमें ये होता है कि इसके MCQs are short and simple. All you need to know is be able to identify a sequence and a series. मतलब एकदम से आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े. That's what you need to practice here. So start में थोड़ी सी basics. What is a sequence? A sequence is just a group of numbers which follow a certain pattern. मतलब कोई भी ऐसे set of numbers जिनके पीछे कोई ना कोई pattern या कोई ना कोई repetition follow हो रही है. ठीक हो गया जी? Okay, now what is the difference between a sequence and a series? This is important. A sequence is just the numbers themselves and the pattern that they follow, and a series is the sum of those numbers. मतलब एक सीक्वेंस से जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जो हमें टोटल सम मिलता है, दैट इज़ व्हाट वी नेम ए सीरीज. Okay, now just a bit about types of sequences. This is important because आपको पता होना चाहिए कि आप क्या solve कर रहे हो. You should be able to identify a sequence or a series just by looking at it because math is all about pattern recognition. तो just quickly हम बताते हैं, एक होगी finite और infinite sequence. A finite sequence which has a certain end and an infinite one which does not have an end. Then we have an increasing and a decreasing sequence. An increasing sequence is one that obviously exponentially linearly increases, and a decreasing sequence is that the values aista aista karke they decrease. It's pretty simple and pretty straightforward. Now that we've done the recap, let's move on to the essence of this course. What types of MCQs should you expect in your NET from the sequence part of this chapter? So the first thing is an MCQ in which you have to identify a sequence. मतलब जो भी आपको group of numbers दिया गया, is there even a sequence or not? And to be able to identify this, we move on to our second step. You have to be able to identify the pattern. एक sequence है तो उसके पीछे there must be some root pattern. Some are harder to identify than others, and हम उन पे भी बात करेंगे when we move forward with the course. बट सबसे पहली बात आपने करनी है कि आपने आइडेंटिफाई करना है इज इट अ सीक्वेंस और नॉट, एंड सेकंड इफ इट इज देन व्हाट इज द पैटर्न बिहाइंड इट. नाउ थर्ड आपको इस तरह के एमसीक्यू सबसे ज़्यादा कॉमन आते हैं, एंड दैट इज वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म और टर्म्स इन द सीक्वेंस. आई स्टिल रिमेंबर इन क्वेश्चंस में थोड़ा तंग किया था, आपको 5 to 6 टर्म्स दे देंगे और आपको कहेंगे फाइंड आउट द नेक्स्ट 2 या नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. Okay, now let's look at the steps that you're going to take to solve these sequence wala questions. First of all, find the change between the given numbers from the sequence. मतलब आपको एक first term given, एक second term given है, आप देखिए उसमें difference आ किधर है, product का difference है, cube का difference है, square का difference है, या किस तरह का difference आ रहा है. If you don't find that specific difference, तो फिर हम चलेंगे into finding some repetition, for example a Fibonacci sequence या कोई और sequence follow हो रहा है. But खैर उस पर हम step 3 पे होंगे. First of all, step 2. If you are able to find a change, now you're going to find possible tricks. अब tricks से मेरा क्या मुराद है, जब मैं अपना NET दे रहा था तो we had certain MCQs, not all of them, but certain MCQs जो कि लगते बहुत आसान थे in hindsight, but if you look at them ना तो they have some sort of trick element to them. Example मैं आपको देता हूँ कि suppose एक आपको sequence given है in which आपके पास squares and cubes given है, तो अब इसमें a trick element would be कि squares are all the even numbers and cubes are of all the odd numbers. मतलब 2 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब फिर 4 का स्क्वायर फिर 5 का क्यूब, इस तरह करके एक सीक्वेंस गिवन है. खैर these will identify in the practice questions. Now step 3 is to familiarize yourself with all the basic sequences. अब इसमें square और cube के sequences आ जाते हैं. Then we have even and odd के sequences जिनके बारे में मैंने पहले step 2 में बात की है. And lastly primes and Fibonacci sequences. I would encourage you कि आप ज़रा Google पे जाएं, अपनी तरफ से different sequences में research करें, and because NET में majority वही आते हैं which are already existing and very common. That's it for the introductory session. Now we're going to move on to actual given progressions and sequences and series in our book, which we'll start with arithmetic, then geometric, and then harmonic, and so on.